Hello everyone. Now we will see the induction of labor. What do you mean by the induction of labor? Induction of labor is the artificial initiation labor after the 28th week of gestation, before the spontaneous onset of labor, for the purpose of achieve normal vaginal delivery. इंडक्शन ऑफ लेबर आर्टिफिशियली हम करते हैं या जैसे कि हम कृत्रिम लेबर कहते हैं, जो कि लेबर स्टार्ट होने के जो कि 28 हफ्तों के बाद स्टार्ट होता है और बेबी नॉर्मल नहीं आ पाता है तो हम उसको इंड्यूस करके डिलीवरी कराते हैं. Then comes the augmentation of labor. It is the intervention that it is attended to enhance already existing spontaneous contaminations that are considered inadequate because of the failure of progression or slow progression of the labor. क्योंकि लेबर बहुत धीमे हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी जल्दी नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं ले पा रहा है, इसके लिए हम ऑगमेंटेशन करते हैं. देन कम्स द इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर. क्या ज़रूरत पड़ती है हमको इंड्यूस करने की? देर विल बी so many problems, especially in maternal conditions and a fetal condition. We will see the one by one. Indications can be for the sake of mother, fetus, and both of them. In maternal condition, we can see maternal medical conditions just like diabetes mellitus, renal disease, chronic pulmonary disease, chronic hypertension, and phospholipids, antibody syndrome also. Then next come the fulminating preeclampsia patient also we are inducing the labor. Then premature rupture of the membrane at term. At that term, that means completion of 9 months of pregnancy, there will be a premature rupture of membrane. Then chorioamnionitis, and next is the rhesus or isoimmunization. If this condition is there, mother's blood is different and baby's group is different, then also we need to induce the labor, or there is a necessary for the induction of a labor. Then icterus gravidarum, intrauterine fetal damages, and bad obstetric history, and there is a accidental hemorrhage also there. If this kind of history is there, sure we will do the induction of labor. Now comes the fetal indications. Why we are doing the induction of labor? For a fetal conditions, fetal compromise, several fetal growth restrictions, RH immunization, oligohydramnios, hydrops fetalis, and post maturity, when the baby is completed the 10 months of pregnancy. 9 months plus 7 days is the normal pregnancy term, but it is completed, it is behalf of beyond 10 months. So post maturity, then we will necessary to do the induction of labor. Then hyperemesis with ketosis at term gestation, intrauterine growth restrictions at term, congenital malformation in the fetus which are incompatible with the life. Then suspected geopatry to the fetus, previous unexplained stillbirth, intrauterine fetal death also. Then for the sake of mother and fetus, preeclampsia and eclampsia case, hypertension and complicating pregnancies, renal disease and complicating pregnancies, diabetes mellitus, and RH immunization. So we have seen these kind of conditions are there, especially in mother and fetus. We are doing the induction of labor. Then contraindication, why we are not doing, that is the major degree of contracted pelvis, we are not doing the induction. That is the major degree of contracted pelvis leading to the cephalopelvis disproportion. In short words, we can say the CPD. Then major degree of placenta previa, type 2B and type 3rd and 4th. Vasa previa, fetal malpresentation, transverse lie, breech presentation, and oblique lie.
fetal distress, umbilical cord presentation and cord prolapse, tumors or cervix or bony pelvis. In this kind of condition, it is a contraindication for the induction of labor. And rest of the points also is there. Previous scarred uterus like previous classical cesarean section, myomectomy scar, uteroplasty, previous 2 or more lower segment cesarean section. If patient is having a previous cesarean section and so many scars are there, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क होते हैं, जो बड़े बड़े दाग हो जाते हैं, वो एरिया एकदम कमज़ोर हो जाता है या बहुत लाइट हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम इंड्यूस नहीं करते हैं. अगर हम इंडक्शन करेंगे बिकॉज ऑफ मेडिसिन इफ़ेक्ट, क्योंकि मल्टी ग्राविडा हो जाता है, पहली प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, डिलीवरी सेकेंड टाइम में वो लोअर एब्डोमेन और भी ज़्यादा हल्का हो जाता है या फिर उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है बेयर करने की. उस कंडीशन में वो पार्ट रप्चर हो सकते हैं और मदर की डेथ भी हो सकती है. तो इस कंडीशन में हम इंड्यूस नहीं करेंगे. देन प्रीवियस डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अगर उससे पहले कोई ऐसी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है तो भी हम इंडक्शन नहीं करते हैं. देन मल्टीपल जेस्टेशन, एक्टिव हर्ब्स इन्फेक्शन, टेस्ट ऑफ फीटल वेलबींग, non-stress test, color Doppler indicating fetal jeopardy before the onset of the labor. Such a fetus may not withstand labor pain. Pregnancy following repair of the vesicovaginal fistula. Then any other contraindication for the safe vaginal delivery. ऐसी कंडीशंस में हम मदर को इंडिकेट नहीं करते हैं या हम उसे इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए तैयार नहीं करते हैं. देन कम्स द प्री रिक्विजिट्स फॉर द लेबर इंडक्शन. देयर शुड बी अ वैलिड मेडिकल इंडिकेशन फॉर द लेबर इंडक्शन एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आउटवेट इट्स पोटेंशियल हार्म. देन consideration must be given to the actual condition wished and preference of the patient with a due emphasis on the cervical status, specific methods of labor induction and associated conditions like a parity and rupture of the membrane. Then facilities for the emergency cesarean section must be there round the clock. Then fetus lung maturity must be confirmed by the mean as far as possible. फीटस के अगर लंग मेच्योरिटी नहीं है तो भी हम इंडक्शन नहीं करते हैं. देन सर्विक्स मस्ट बी राइपन और इफ़ द सर्विक्स इज अनराइप देन इट इज़ प्राइमिंग टू बी डन बिफोर द इंडक्शन. इंडक्शन करने से पहले सर्विक्स का राइपनिंग होना ज़रूरी है या सर्विक्स के मुंह का खुलना या सर्विक्स का विस्तारण होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम इंड्यूस नहीं कर सकते हैं. द फीटस शुड बी एबल टू विथस्टैंड द hypoxic effect of the labor pain. There should be no pre-existing fetal hypoxia. Then comes the pre-induction methods of the cervical ripening. There are so many mechanical as well as the pharmacological methods available for the cervical priming. The popular one includes the use of mechanical cervical dilators and the synthetic prostaglandin E1. In short, we can say capital PGE1 and capital PGE2 administration. Mechanical methods include manual dilatation and stripping of the membrane. Mechanical dilators like a osmotic, hyposcopic dilators swell by the extracting water from cervical tissue gradually expanded the cervical canal. Example, the laminare japonicum tent or lamical synthetic tent impregnated with a magnesium sulfate. That means there is a one laminare tent होता है जो कि एक
नॉर्मल लकड़ी के जैसा होता है, बट वो दैट इज़ ए नॉट ए नॉर्मल लकड़ी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन दैट इज़ ए जैपनिकम टेंट कहलाता है। उसे जब हम सर्विक्स में रखते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे ही हम उसे वजाइना में रखते हैं वो धीरे धीरे स्वेलअप होने लगती है और धीरे धीरे सर्विक्स का मुंह अपने आप खुलने लगता है। और जैसे ही सर्विक्स का मुंह खुलता है, ये दिस इज़ द वन ऑफ द इंडक्शन बेबी को हम डिलीवरी करा सकते हैं। लैमिनार टेंट आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड पेरिपार्टम इन्फेक्शन, extra amniotic Foley's catheter balloon inflation with a inflation within of 30 to 80 ml, extra amniotic saline infusion with infusion rate of 30 to 40 milliliter per hour, double balloon device. The balloon of the catheter is withdrawn gently till the level of the internal cervical os. The basic mechanism of cervical ripening by the extra-amniotic balloon catheter seems to be direct pressure and overstretching of the lower uterine segment and the cervix. So these are the things which we are using for a induction. Then comes the prostaglandin. Prostaglandin E1 and prostaglandin E2. Dinoprostrane, we can another name we know, prostrone. Uh, it have been used commonly via various routes. Is widely used for the cervical priming. It can be administered via sublingual, oral, and intravaginal route also. So this is the induction of labor.